Good afternoon. Today as you have seen that there's written summary of acute inflammation. As we were discussing the acute inflammation and was supposed to do the summary video of this so that it can be easy to memorize the things in a proper manner. अगर हम बात करेंगे ना पहले जो बिफोर गोइंग इनटू दिस we have to just go before going into the vascular phases or cellular phases उससे पहले हमें पता होना चाहिए what is inflammation. That's the main point. अगर हम inflammation की बात करेंगे ना as I have said, as we have studied here, inflammation is nothing, it's vascular response towards any injury irrespective of the cause can be anything. या तो मतलब कोई पैथोजन होगा या कोई इंजरी होगी या कोई ट्रॉमा होगा उसके रिस्पॉन्स में हमारा एक वेस्कुलर टिश्यू हमारा ब्लड कुछ रिस्पॉन्ड करता है. दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेमेशन. एंड इन्फ्लेमेशन में हमारे पास चार कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं विच वी कॉल एज कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन विच वर गिवन बाय द Celsius scientist, and last one was given by Robert Koch, which we call as modern father of microbiology. अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास पहली चीज व्हाट आर द फोर कार्डिनल साइंस. उसमें हमारे पास एक तो रेडनेस होती है जिसको हम रूबर कहते हैं, हीट होता है, पेन होता है, और स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग होती है. एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना द फिफ्थ वन इज नथिंग, इट्स फंक्शनल रीजन दैट देयर इज लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द टिश्यू. इट इज बट ऑब्वियस इफ द टिश्यू इज गेटिंग डैमेज इट विल बी नो लॉन्गर टू परफॉर्म function, so there is loss of the functional activity of the tissue or of the cell. And now before going, we have two types of inflammation. Like as you know, हमारे पास दो तरह के होते हैं, acute and chronic inflammation. On the basis of time span, acute की बात करेंगे तो it is short lived, and chronic it is long lived. And उसके बाद हमने देखा था acute inflammation. अगर acute inflammation की बात करेंगे ना, acute inflammation में हमने देखा था there are two phases. One we call as cellular phase and second we call as vascular phase. First thing vascular phase. अगर हम vascular phase की बात करेंगे, involves the change in the blood vessel. पहले क्या होता है as we have said, अगर हमारे पास कोई इंजरी होगी तो there will be trauma. अगर trauma है यहाँ पर तो there will be vasoconstriction so that the blood flow will, so that there will not be profusely bleeding can be stopped. उसके बाद क्या होगी vasodilation क्यों होगी, so that increase number of cells so that there can be neutralization of the pathogen as soon as possible. And there is another one that leads to the stasis. Stasis क्यों होती है as we have laminar blood flow है तो there the cells come at the periphery and blood flow increase, there occurs obstruction of the blood flow to some extent and that leads to the stasis of the blood. And उसके बाद increased vascular permeability is due to various causes like हमारे पास leukocyte mediated cell injury होती है या हमारे पास there are various mediators which are released, like we have there is a release of bradykinin या histamine that causes vasoconstriction, that causes constriction of the endothelial cell. constriction होगी तो paracellular gap increase होगी and that will lead to the increased vascular permeability so the cells can migrate out from there. उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट द सेलुलर फेज. उसके बाद वेस्कुलर फेज. नाउ देयर कम्स अनदर थिंग दैट्स व्हाट वी कॉल सेलुलर फेज. सेलुलर फेज में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस, द सेल्स कम टुवर्ड्स द मार्जिन, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मार्जिनाइजेशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ द सर्टेन केमिकल साइटोकिन्स होते हैं या हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है दैट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एक्सियल ब्लड फ्लो टू द पेरिफेरी. दैट्स प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज मार्जिनेशन के बाद क्या होती है, रोलिंग तो होती है क्योंकि देयर व्हाट फॉरवर्ड पर्पस वी हैव ब्रॉट दीस सेल्स देयर so that they can migrate out to the site of the injury, to the site of the pathogen. उसके बाद रोलिंग होती है. रोलिंग is mediated various proteins which we call as selectin. We have three types of selectin: E selectin, P selectin, L selectin. E selectin we call as endothelial cells, endothelial, and P selectin platelet. And platelet क्यों कह रहा जाता है क्योंकि they were first released, they were first isolated from platelets, that's why we call them as pre-selectin. And L-selectin is specific to the lymphocytes and it is used in the lymphoid tissues like we have हमारे पास tonsils वहाँ पे इनका यूज है. एंड उसके बाद क्या होता है, देयर ऑक्स रोलिंग, इट इज अ वीक एडिशन. उसके बाद है फर्म एडिशन इज मीडिएटेड बाय वेरियस प्रोटीन्स व्हिच वी कॉल एज इंटीग्रेंट्स. व्हेन देयर इज फर्म एडिशन उसके बाद क्या होता है, द सेल्स फर्स्टली द सेल्स वर इन द सेंटर, दे कम टुवर्ड्स द मार्जिन, देयर ऑकर रोलिंग के बाद एडिशन हुआ. एडिशन के बाद ड्यू टू इंक्रीज एज देयर इज increased vascular permeability, so there should be what you call as transmigration as also known as diaperesis. That is the cell crosses the vascular membrane and goes into the extravascular tissue. The process is what you call as transmigration. And transmigration of two types, either it can go along the cell or it can go through the paracellular, that what you call as paracellular migration or transmigration.
उसके बाद लेट्स सपोज दिस इज द वेस्कुलर टिश्यू, अगर सेल यहाँ पे है, यहाँ से मार्जिन हुआ, फिर एडिशन हुआ, फिर माइग्रेशन यहाँ तक आ गई, एंड पैथोजन लेट्स सपोज इज हियर, तो इस सेल को कोई पैथोजन के पास लेना चाहिए, दैट्स व्हाट यू कॉल एज कीमोटैक्सिस, देयर ऑकर्स द मूवमेंट ऑफ द सेल टुवर्ड्स द साइट ऑफ द पैथोजन, वी आर मीडिएटेड बाय वेरियस केमिकल्स, लाइक दे रिलीज टॉक्सिन रिलीज करेंगे, या साइटोकिन्स रिलीज करेंगे, या कोई भी सब्सटेंस रिलीज करेंगे, इट विल अट्रैक्ट दिस बैक्टीरिया टुवर्ड्स itself. When there is attraction towards itself, the bacteria will migrate, and this process is what you call as chemotaxis. And now there's another thing. For what purpose we have brought the WBC there? So that there can be neutralization of the pathogen. And for that neutralization of the pathogen, we use the process that's what we call as opsonization. Why we do opsonization? Let's suppose if these are two cells, this one is also negative charge, this one is also negatively charged. When they come towards when they come proximal to one another, there will be repulsion, and there will be repulsion, so there it won't be effective for there if we have to combine these two. It is impossible to combine these two. For that, same holds true for here. Bacterial cell wall is negatively charged, so is true about neutrophil cells. For the neutrophil cells to phagocytose these pathogens, there should be the process what we call opsonization. Opsonization में क्या होता है? There it's just coating of the pathogen so that the negatively charged repulsion can be overcome, and as a result there will be phagocytosis, and it is mediated by या हमारे पास होते हैं complementary system C3A, या we have antibodies IgA, या we have various lectins, proteins. And now the last process is what you call as phagocytosis. Phagocytosis की अगर हम बात करें, phagocytosis में क्या होता है? हमारे पास तीन फेज होते हैं. पहले there is recognition and adhesion, and उसके बाद होता है recognition, उसके बाद होता है engulfment के बाद होती है killing. Recognition कैसी होती है? Recognition जो हमारे पास मैक्रोफेज होती है, सॉरी न्यूट्रोफिल होती है, उनमें होती है manus binding sites. Manus binding sites are absent in the human cells, and human cells have n-style glycosides, so there occurs the binding of this. That's what the reason the neutrophil cells do not phagocytose in the normal cell, but they phagocytose is the what you call as vascular cell, सॉरी पैथोजन. उसके बाद क्या होता है? phagocytosis, देयर ऑफ रिकॉग्निशन के बाद ये अटैचमेंट होते हैं टुवर्ड्स द रिसेप्टर. जब अटैचमेंट हो गया तो रिजल्ट्स इन द मेम्ब्रेन इमेजिनेशन से रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन व्हाट यू कॉल एज, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन इमेजिनेटेड मेम्ब्रेन को हम कहते हैं व्हाट यू कॉल इट एज, इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया. और सीडोपोडिया के बाद क्या होता है? मेम्ब्रेन डिजेनरेट होता है, रिजर्वेशन, एंड द सीडोपोडिया गोज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल सेल. द प्रोसेस दैट व्हाट वी कॉल एज दैट we call it as phagosome. Phagosome fuses with the lysosome, we call it as phagolysosome. And there is another process that's killing. Killing can be two types. Either it can be oxygen dependent, it can be oxygen independent. Agar oxygen dependent hogi to mediated by various reactive oxygen species, like we have superoxide radical, we have peroxide radical, we have hydrochlorous acid, which is the most potent antibacterial agent. And in case of oxygen independent, we have various oxygen independent में there are series of various enzymes, like we have lysozyme, proteases, and all those lysozyme, protease, lactoferrin, and that will ultimately lead to the death of this pathogen. And this ends with the process of what you call as acute inflammation, and after that there will be termination of this inflammation mediated by various chemicals, and it will lead to the resolution of the swelling, redness, and pain. What is the, and before ending this we will look on to certain important points. That's what is the reason of the pain. Reason of the pain is due to the release of radical histamine. It irritates the nerve endings, results in the pain. And what is the reason for the swelling के लिए reason है, as the vascular permeability increases, more and more blood flow comes, oncotic pressure remains the same, hydrostatic pressure increases. As hydrostatic pressure increases, as you know, hydrostatic pressure is a part of home. It is part of home. As ये starting force में पढ़ा होगा आपने कि hydrostatic pressure favors the fluid to move out of this chamber. मतलब अगर यहाँ पे hydrostatic pressure ज़्यादा है, ये चाहेगा कि ये fluid यहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाएगा, लेकिन ऑन्कोटिक प्रेशर फ्लूइड को रिटेन करता है. जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना ये होगा ज्यादा, उतना मतलब फ्लूइड आउट जाएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन द स्वेलिंग. दैट्स व्हाट वी कॉल एक्सुडेशन, एंड इट इज कॉल्ड एक्सुडेट. इसमें सेल्स भी होते हैं. And another thing what you call as, what is the reason of this redness? Redness का reason simple है, redness और heat का reason एक ही है, क्योंकि increased blood flow है, blood flow more आएगा तो red दिखेगा ही दिखेगा, और more heat भी produce होगी. Hope you enjoyed.
थैंक यू।